I remember one of the cases, like it was my second or third day. I was talking to a customer and that customer was like, I want to close this account. My son is deceased. मैंने एक ही चीज सीखी थी, अगर कोई भी कस्टमर आता है कुछ बोलता है, you have to say fantastic, amazing, wonderful. मुझे उस टाइम पे I'll say मुझे deceased का मतलब नहीं पता था. I said amazing, wonderful. QA was listening to that call. वो बंदा दौड़ के मेरे पास आया, उसने कहा उसका लड़का मर गया. Oh my God, फ्रीज हो गई थी उस टाइम पे. कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने अकाउंट्स क्लोज कर दिए. कस्टमर की रिक्वायरमेंट कुछ और थी. He was traveling out and he told me कि I just want you to put a note so that if you find any transaction happening outside, you don't block my card. मैंने कहा ठीक है, enjoy. And I used to block it. What was your parents' reaction? Basically, an engineer turned into a trainer now. उन्होंने थोड़ा बड़ा सोचा था. मैं जिस चीज से भाग रही थी ना, मैं जब उसी चीज के साथ होने लगी तो मुझे वो चीज अच्छी लगने लगी. The moment I got promoted as an SME, my mother called me and she was like, we are fixing your marriage. I'm a parent now. शायद मैं आज के टाइम पे उनकी कंडीशन समझ सकती हूँ. मुंबई is altogether a different world. वहाँ मोमोज सस्ते मिलते थे, समोसा महंगा मिलता था. यहाँ पे समोसा सस्ता है, मोमोज महंगे हैं. You should always make sure that you have a backup. I followed my passion because my passion was affordable. Hello everyone and welcome to another episode of JCL podcast Bindas Bowl Season 2. I am Rajshri and today we have somebody who is not only a trainer, motivator, but is somebody who you'll always find her smiling. We have Satakshi from the JXT team. Welcome to the show, Satakshi. Thank you, Rashi. So why don't we start with you telling something about your role in JioMart? So I am a trainer. Anything that is related to training and coaching, I'm involved. Yeah, so Satakshi, I've always found you very passionate about what you do, about your work. Yeah. So can you tell a bit more about your journey till JioMart and how you land up in this role? Okay, so I started my career journey from Delhi. One day I realized that there were training sessions going on because our cabins were attached. So I realized कि वो जो काम हो रहा है that is more interesting. क्योंकि वहाँ पे जो trainers थे, जिस तरीके से उनकी training देने का वो था, method था, the way he used to express himself, everything was mesmerizing. So he was an aged person, like तो वो actually वो trainers को training दे रहे थे. He was an NLP trainer. So I got in touch with him and he guided me कि if you want to change your field, this is what you have to do. So I decided to move into a different department. I moved to a different department without knowing the challenges that I would come across. I went through this VNA training because I was told that there's only one vacancy wherein you will have to deal with Australian clients. After how many months or like when you realized that you need to shift to the training role that was there? 1 month was enough. When I started working in the Delhi, तो वहां पे मैंने रियलाइज किया कि ये चीज है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है. आई शुड गो देयर. सो आई चेंज्ड माय फील्ड. बट व्हेन आई केम टू नो कि ये भी बहुत डिफिकल्ट है. यहाँ पे वॉइस एंड एक्टिंग ट्रेनिंग हुई मेरी. चलो वॉइस एंड एक्टिंग ट्रेनिंग में पीपल वर लाफिंग एट मी बिकॉज आई वाज नेवर ट्रेन्ड इन सच अ वे कि यू हैव टू गो इन दिस फील्ड ओनली. I was trained in such a way that I have to work in IT. So I never worked on my communication. But when I moved to that field, I realized that communication is the only key to success in this field. So still I thought कि अब change कर ही लिया है तो अब जो struggles होंगे I have to manage. And I come from that part of the country wherein MTI is a big issue. That is mother tongue influence, right? So एक mother tongue influence. I come from Varanasi. Nice. So mother tongue influence को हटाना, वो भी हिंदी से नहीं इंग्लिश से replace करना is very difficult. So people used to I'll not say make fun of me, but हाँ मैं जब बोलती थी तो वो लोग हंसते थे. But then I managed to score around 7.5 was required. Score of 7.5 was required to qualify for the Australian process, and I managed जैसे तैसे. वो जैसे तैसे means I did not take any risk. I mean, अगर मुझे इंग्लिश में बात करनी, I used to say simple plain statements without if but however कुछ नहीं. Simple statements बोलो, स्कोर ले आओ. No scope of any कुछ नहीं. mistake. कुछ नहीं. So वहां पे मैंने क्रैक कर लिया. I moved to the process. वहां पे process training हुई. चलो वो भी मैंने actually very clever of you because if you think language, आप जितना ज्यादा उसमें you're adding more verbs, more pronouns, there are more chances of getting it wrong. exactly. That is Very because you have grammar.
Yeah, and you have been a great student and also Yes. maybe you could connect with dots better. सो ग्रामर, क्योंकि जब आपकी VNA ट्रेनिंग होती है, वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग होती है ना, दैट इज मोर ऑफ ग्रामर थिंग. इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर स्पीकिंग, हाउ यू आर स्पीकिंंग, लेकिन जो आप बोल रहे हो ना, उसमें ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, राइट? सो मैंने मैनेज कर लिया. I was happy. I was so happy. I still remember the day when I cracked this VNA. But then I moved to product and process training. Product and process training भी हो गया. Real adventure started when I hit the production. मैंने प्रोडक्शन जब हिट किया, वहां पे जब मुझे लाइव बातें करनी पड़ी क्लाइंट्स से, वहां पे पहली कॉल पे जब मैंने क्लाइंट्स से बात करा, एंड मैंने यहाँ पे भी एक ट्रिक सीखी थी कि अगर कुछ नहीं समझ में आए तो बैलेंस बता के हटाओ. कुछ भी नहीं समझ में आए, टेल द बैलेंस ऑन योर अकाउंट and get rid of it. Handling banking sector. Banking sector, yeah. First day, I still remember the first day wherein it was a lot of struggle for me. I managed to change my field, and somehow that this transition was little challenging, but then I was still enjoying the journey. So getting into the role was one thing, and life after that was another thing. Yes. So the transition was beautiful. I loved this transition, and but still my focus was to get into the training thing. I never wanted to sit on a desk and talk to clients. I always wanted to be a trainer, right? So अभी भी मेरा काम हुआ नहीं था. अभी वो ट्रेनिंग तक जाने के लिए I had to qualify for certain things. It was a big achievement for me. I would say it's an achievement for me. So once you switched your role and you got your dream role, then after that, what were the initial transition periods for you, or the challenges that you faced? And I'll say I faced a lot of challenge, but one thing I learned from a mentor is to convert challenge into an opportunity. A person who is from that part of the country wherein MTI is a big issue, I qualified for ऑस्ट्रेलियन प्रोसेस. उस टाइम पे उनका ऑस्ट्रेलियन प्रोसेस के लिए वो लोग ना ऐसे बंदों को हायर करते थे जिनकी इंग्लिश वही वो टंग ट्विस्ट करके बोलते हैं ना, वैसी वाली इंग्लिश होनी चाहिए थी. तो उस प्रोसेस के लिए आई क्वालिफाइड, राइट? सो जब मैंने वो चीज को क्रैक कर लिया तो बाकी के स्ट्रगल्स तो ठीक है, उससे कम ही थे मेरे. बट येस, व्हेन आई वाज डीलिंग विद लाइव कॉल्स, आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने बहुत चीजें ऐसी भी की हैं जहाँ पे मेरे एस्केलेशंस भी आए हैं. आई रिमेम्बर वन ऑफ द केसेस, लाइक इट वाज माय सेकंड और थर्ड डे ऑफ द प्रोडक्शन. आई वाज टॉकिंग टू अ कस्टमर एंड दैट कस्टमर वाज लाइक, आई वांट टू क्लोज दिस अकाउंट, माय सन इज डिसीज्ड. आई वांट टू क्लोज दिस अकाउंट, माय सन इज डिसीज्ड. एंड आई वाज लाइक ओके. और मैंने ना पूरे ट्रेनिंग में मैंने एक ही चीज सीखी थी, अगर कोई भी कस्टमर आता है कुछ बोलता है, यू हैव टू से फैंटास्टिक, अमेजिंग, वंडरफुल, 2-4 एडजेक्टिव्स मैंने याद कर लिए. एंड व्हेन ही सेड माय सन इज डिसीज्ड, मुझे उस टाइम पे आई से मुझे डिसीज का मतलब नहीं पता था. आई सेड अमेजिंग, वंडरफुल, फैंटास्टिक. And my QA was listening to that call. That person threw the headset. वो बंदा दौड़ के मेरे पास आया, उसने कहा उसका लड़का मर गया. Yeah, he wants to close the account. And I was like, oh my God. मतलब मैं फ्रीज हो गई थी उस टाइम पे. मैं फ्रीज हो गई. फिर मैंने क्या करूं. मैंने कहा ठीक है, होता रहता है. मैंने कहा जानबूझ के तो नहीं बोला. Then I learned a lesson कि नहीं भी समझ में आए, 4 बार प्रोब करो, 4 बार पूछो कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, फिर उसके बाद से कस्टमर को रिप्लाई करो. ठीक है, तो वो भी फेज हुआ. मैंने कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने अकाउंट्स क्लोज कर दिए. कस्टमर की रिक्वायरमेंट कुछ और थी, ही वाज ट्रैवलिंग आउट एंड ही टोल्ड मी कि आई जस्ट वांट यू टू पुट अ नोट सो दैट इफ यू फाइंड एनी ट्रांजैक्शन हैपनिंग आउटसाइड, यू डोंट ब्लॉक माय कार्ड, राइट? मैंने कहा ठीक है, एंजॉय, लवली. एंड आई यूज्ड टू ब्लॉक इट बिकॉज थोड़ा सा प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ट्रेनिंग था ना, बहुत सारी चीजें थी, तो मैंने ब्लॉक कर दिया. उस पर भी कई सारे एस्केलेशंस आए, बट इट वाज जस्ट फॉर 1 or 2 months. फ्रॉम द 3rd month आई स्टार्टेड रॉकिंग. मतलब 2 महीना मिला मुझे, मैंने सीख लिया प्रोसेस. ठीक है, ये भी गलतियां हो सकती है. मैंने 2 महीने में ये सीखा कि कितनी गलतियां हो सकती हैं लोगों से. 3rd month से आई स्टार्टेड रॉकिंग. आई स्टिल रिमेम्बर, मतलब वीक जो स्टार्ट हुआ था मेरा 3rd से स्टार्ट हुआ, 3rd या 4th से स्टार्ट हुआ था. 30th तक मेरा एक डिट्रैक्टर नहीं आया था. डिट्रैक्टर मीन्स नेगेटिव कमेंट्स या फिर नेगेटिव स्कोरिंग नहीं आई थी. एंड ऐसा नहीं था कि आई वाज डूइंग वंडर्स ऑन कॉल. इट्स जस्ट दैट आई वाज टॉकिंग टू देम. मेरी तो AHT की बैंड बज जाती थी, इतनी ज्यादा हाई AHT रहती थी. बट माई AHT इज लाइक एवरेज हैंडलिंग टाइम, द टाइम यू आर टेकिंग टू टॉक टू द क्लाइंट. मेरी AHT की बैंड बज जाती थी. बट आई एम टेलिंग यू,
that was a very amazing experience for me, because मैं जिस चीज से भाग रही थी ना, मैं जब उसी चीज के साथ होने लगी तो मुझे वो चीज अच्छी लगने लगी. तो मुझे समझ में आने लगा कि डिस्कशन कॉन्वर्सेशन में लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, इट्स ऑल इमोशंस, राइट. सो अगर मुझे उनकी एक वर्ड, मतलब उन्होंने 4 सेंटेंस बोला, 4 में से अगर मुझे 2 भी समझ में आया, मैं वो 2 सेंटेंसेस के बेसिस पे ना कस्टमर्स को पूरी बता देती थी क्या उनकी चीजें हैं, एंड 99% वो सही बैठता था. तो ऐसे ऐसे करते करते I qualified for this SME role within 6 months. That was from client's end only, because मुझे 6 महीने मुझे केवल 2 या 3 detractors आए होंगे, and everyone was happy with my score. So you got promoted. I got promoted as an SME within 6 months. That's And okay. that too from that was a request from client's end, right? तो हमारी policy नहीं थी, but since it was what we say parallel movement, तो मुझे SME बनाया. तो मेरे लिए वो भी एक बहुत खुशी की बात थी, because that was another step towards being a trainer, right? So I was promoted as an SME. The moment I got promoted as an SME, my mother called me and she was like, "We are fixing your marriage." And then another story began. I then moved to Mumbai. After marriage, I moved to Mumbai, and in Mumbai, I started my career as a trainer. You told that you're from Banaras, which is a beautiful city rich in culture and language, and coming from an environment where you were introduced to debating language, like discussion on language and all. So, what was your parents' reaction when you shifted your career from an engineer, like basically an engineer turned into a trainer now? Okay, so my mother, she was not happy. She was not satisfied. See, I understand. I understand her point as well. She invested a lot of time and money in me. She had invested. I mean, say, उन्होंने काफी हमारे पीछे अपना समय बर्बाद तो नहीं कहूंगी, बट वो बहुत ही वो थी मेरे जॉब को लेके, मेरे करियर को लेके, मेरी पढ़ाई को लेके, वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी. शी ऑलवेज यूज्ड टू टेक फॉलो अप्स कि व्हाट्स हैपनिंग इन द कॉलेज, हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग, कैसे तुम प्रिपेयर कर रही हो, क्या कर रही हो, काफी चीजें थी. तो उन्होंने थोड़ा बड़ा सोचा था. उनकी सोच काफी बड़ी थी कि मतलब बच्चा इंजीनियर बनेगा, यहाँ जाएगा. और I'm a parent now. शायद मैं आज के टाइम पे उनकी कंडीशन समझ सकती हूँ, बट उस टाइम पे she was not happy. But when she started, when she saw me that I'm enjoying my job, when I started my career as a trainer, she was satisfied. She was like, ठीक है, she is doing what she wanted. She's happy. She's happy now, yeah. Okay. So from the first day mashup of the deceased account to finally getting promoted within a span of 6 months, how was your journey? My journey was very exciting. So I, in the entire 6 months, I spent my time in learning, just in learning. So language was an issue for me, no doubt. So while talking to Australian clients, there were certain words, jargons that they used. Accent. So मैं उसको नोट डाउन कर लेती थी. कभी मैं उसको नोट डाउन करती थी, फिर आगे मैं उसका जाके चेक करती थी कि उसका मीनिंग क्या है. वो प्रैक्टिस मैं आज भी रखती हूँ. उसकी मीनिंग क्या हो सकती है, एंड हाउ आई कैन यूज दैट वर्ड इन अ स्टेटमेंट, राइट. So that's how I started working on my English and grammar. I did not want to be perfect. I just wanted to fit in that environment. That's it. I still remember one discussion I had with my NLP trainer. He was telling me कि I never imagined that a person like him will go ahead and commit this crime. I was like, will go ahead, this is a word. I still remember that thing, will go ahead. Now I have to use it. कि will go ahead मुझे कहाँ यूज करना है. उसके बाद से I framed around 10 sentences in which I used will go ahead and do this. This person will go ahead and will do this. ठीक है. तो ऐसे करके बहुत बेसिक्स से मैंने किया. So you mentioned about scoring a really high NPS score. How does that help you connect with people on a personal and professional front? Okay. So dealing with people is not difficult when you understand how to deal with emotions, right? So अगर कोई गुस्से में है तो आप शांत हो जाओ, right? अगर कोई
कुछ लोग होते हैं जिनको लॉट ऑफ अश्योरेंस रिक्वायर्ड होती है. ऐसे भी कस्टमर्स आते थे जिनको विश्वास नहीं होता था हमारे पे, हमें उनको अश्योरेंस देना पड़ता था काफी सारा. तो few people are there, they are overthinkers, they need lot of assurance. So these were certain things that I understood कि ये बंदे का नेचर ऐसा है तो इसको ऐसे डील करना है, इन्होंने ऐसे करा तो इनको ऐसे डील करना है. So that's what I have started implementing in my personal life as well. So when I think that things are going worst, I'm like, wait, let me handle it. I'll do it. I always use it. I'm there for you. I'll do it. I'll fix it. So this assurance thing does wonders. So ये emotions deal करना सीख गई मैं. So language is not a barrier for Language is not a barrier. Not at all. It's all emotions. as someone who is doing what they love, do you have your fair share of lows as well? And if yes, then how do you overcome it? I keep myself motivated. I always keep myself motivated. See, I have been lucky when it comes to having good mentors and guide, right? तो इस मामले में मैं काफी लकी रही हूँ. मुझे शुरू से मुझे मैनेजर्स, मुझे मेंटर्स, मेरे कलीग्स अच्छे ही मिले हैं, राइट? तो even when I started my journey as a trainer, I had a very good manager. She supported me in understanding the process. Now when I am working in a company like Reliance, I still have very good leadership. I have good manager, and yes, she helps me understand ki what needs to be done, kab kya mujhe, in case I miss. So she is there to guide me. But हाँ, there are certain times, there are certain points wherein I feel like नहीं मुझसे गलत हो गया, मुझे नहीं होना चाहिए था. At that time, I'm like कि the only thing which that can fix this is कि आगे से नहीं करना है. अब चीजों को change करना, this is a time wherein I need to change this thing and try anew. So जो हो गया. Keep doing it. और journey start खत्म थोड़ी ना होती है. Every day you learn a new thing. What a beautiful way of looking into things. Yes. So even your mistakes are also what we say. You commit mistakes and you learn from it. So other than work, how does a day in Shatakshi's life look like? How is the life post work? Okay, so I have a daughter. She's 6 years old, and yeah, my family. I live in a joint family. My in-laws, my husband, my daughter. So when I go home, I spend time with them. I sit with my daughter, my husband. We discuss our day. She tells us कि school में क्या हुआ. Then I spend time in planning my next day. That's how it goes on. So Monday to Friday कैसे जाता है पता नहीं चलता. So still I try to spend maximum time with my family only after work. And other than mentoring people and being passionate about language and all, do you have any other passion also? We have heard it's food. I am foodie. Yeah. So I love trying new cuisines. So when I moved to Mumbai now, so Mumbai mein I realized that people are more inclined towards South Indian food, South Indian and Chinese, right? So I was not an idli dosa and medu vada person, right? मैं तो दिल्ली में थी तो I was like कि छोला भटूरा चाहिए मुझे, आलू का पराठा चाहिए, ठीक है. वहाँ मोमोज सस्ते मिलते थे, समोसा महंगा मिलता था. यहाँ पे समोसा सस्ता है, मोमोज महंगे हैं. तो मेरा पूरा टेस्ट दिल्ली वाला था. तो जब मैं यहाँ आई मुंबई में, तो मुंबई में मुझे मतलब I and my husband we both used to explore places. तो मैंने एक्सप्लोर किया चाइनीज पॉइंट. मुझे चाइनीज की लत लग गई यहाँ पे. मुझे चाइनीज मुझे बहुत पसंद है. देन आई स्टार्टेड ईटिंग साउथ इंडियन एज वेल. तो धीरे धीरे वो टेस्ट जो है मैंने डेवलप कर लिया. सो मुंबई इज ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ल्ड. इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड. तो ठीक है. I love eating and yeah, Maggie too. Finally, for all our listeners who might be motivated by your story, what word of advice you have for them if they are looking to switch into something which they feel that they don't have the background and knowledge for it, but they do want to take it? So what would be your advice to them? I have a very simple advice. You should follow your passion. However, you should always make sure that you have a backup. Right? I followed my passion because my passion was affordable. Right? But अगर आपका passion ही इतना high-fi है, then you have to
make sure that you have a backup, because you have a family to feed. You have to put food on their table. So that's what my suggestion would be. पैशन तो पैशन होता है, पैशन करियर नहीं बन सकता, और करियर अगर बनाना है तो उसको उस लेवल पे आपको रखना पड़ेगा अपने पैशन को, कि हाँ करियर और पैशन दोनों में आपका बैलेंस हो जाए. Change is the only constant, and today's episode was a beautiful reminder of that. Thank you for being here with us, Satakshi. And to all our listeners, do remember to follow us on YouTube and Instagram. Until next time. Who might be in a similar